Once again, welcome back to another video. So, in this video, we will be discussing about the strategy clear NCET in 4 days. In the fourth day, you're going to have exams. I don't know about it for 29th of this month. All the best for you guys. And one more thing from my end, as an individual, as a faculty of the test for you guys, is the score in this exam is going to decide your further moments in your future, like whether you're going to get into NIT, IIT, RIE. All this depends on you guys. So, if possible, if you could study as much as possible in in this 4 days, then this particular exam and your further moment in your life is definitely going to be more worth it. So within, like, if you can get 1 mark at a particular point, or 4 marks at a particular position, like a particular question, try to learn that question, try to solve those questions, and try not to miss an IIT because of 4 marks. This is what I would love to tell from my end. This is something which is going to decide whether you are going to get into IIT Jodhpur or IIT Kharagpur. Okay, these 4 days. So study really well. From my end, I would love to tell that raha pakad ke ek chala chal pa jayega Dushala. Definitely, you will be where you wish to be in your life if you're putting forth the effort which is required for getting into that particular position. So, further, what I would love to tell, I will be shortly discussing about what is going to happen, what you can do in this 4 days for achieving best marks and majorly in the GTN, like general test. So guys, without further ado, as usual, let's get started. So guys, there are scoring points, or scoring chapters in GT, where most of the questions are expected to come in an exam. Okay. So I'll be putting for those chapters, majorly ratio and proportion, take blood relation, coding, decoding, and series. Take. So further, blood relation is an important chapter. Series is also kind of important. These chapters which I'm writing over here are really important. Okay, without looking at these chapters, please don't go for exam. And we have also prepared a series of 15 questions, like 10 to 15 questions, 15 to 20 questions, I guess, around. So we have posted inside our challenge. What you guys have to do is go through those lectures. It will be around uh, it will be around 21 hours. These lectures are going to be around 21 hours. Take. Again, we are having in 3 days, if you are planning to complete 21 hours is around, the lectures are around 30 to 45 minutes. But even if you're taking much time and pausing the videos, these, if you're doing that, then it will be around 1 hour max to max. Take. So it will, if you're taking 3 days to complete these lectures, including today, then it will be around, if you're ready to dedicate 10 hours per day, more than enough. Again, you need not take 7 hours. What you can do is watch lectures in 1.5x. ठीक 1.5x या फिर 2x में देख लेना. क्वेश्चन आसान आसान है. When you see a particular question which you don't know, like I can't solve this question, left all other questions, try to solve it. And if you see those kind of questions, what you have to do is pause the video, make it slow, and watch the lecture properly. Otherwise, try solving the question. If not possible, then watch the lecture.
ठीक, this is what you can do. Again, let's move on to the scoring points. Again, series, then number system, number system, then percentage, percentage. Further, mixture and allegation, not bad. Then further, uh, profit and loss, profit loss, and then simple interest and compound interest. Further, time and work, time and work, time and work. Then speed, time and distance, speed, time, distance. Then syllogism, where that all A's are B, these stuffs. All some B's are A, some C's are D. These things are talked about that particular chapter. And further, analogy, analogy, and then clocks, calendar, clocks, calendar, number system, mensuration, mensuration, yeah, direction, direction sense, yeah, direction and distance, also known as direction and distance. And further, so these are the major chapters. So as you guys know, what you have learned in your 11th standard Venn diagram, these stuff. Try to go through that particular thing also. Take. So these are the main things. So average and ages, yeah, ages, average. So these are the major chapters from where questions are expected. Take, take. So yes. So ratio and proportion, blood relation. Blood relation is an important chapter. I am damn sure that one question will be from this chapter. Coding, deep coding is also important. One question is definitely going to be in this particular chapter. One or two questions. ठीक है? And series में से एक question पक्का है, पक्का ही पक्का. और the number system में से एक question होगा. Divisibility rule kind of question will be asked if they are asking some question. Divisibility rule of 11 या फिर 9 या फिर 3 ऐसा, या फिर मिक्स करके पूछने का चांसेस है, या फिर ये साइड से पूछेगा क्या, ये पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है, वो वाला चीज पूछेगा. बेसिक चीज है ना, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये चीज उसमें से भी सवाल बनने का चांस है. ठीक, so नंबर सिस्टम में सबसे परसेंटेज से क्या, एक नंबर देने का चांस है और उसका इतना 60% ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर क्या है, वो वाला सवाल पूछने का चांस है. मिक्सचर एंड एलिगेशन से नॉर्मल हमने जो किया है क्लास में, ये सब चीज हमने किया है क्लास में. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से मार्क मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो वाला चीज के ऊपर सवाल होगा, जो जो चीज हमने क्लास में किया है. और फर्दर सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से यूजुअल, दो लोग साथ में काम करेगा वो वाला चीज, वहां से क्वेश्चन पूछने का चांस है. ठीक, साथ में काम करेगा इतना समय में खत्म हो रहा है, एक बंदा करेगा तो फिर कितना टाइम में खत्म होने का चांस है, ये चीज. तो टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस,
जो चीज हमने क्लास में किया है, सिलोगिज्म हमने डिटेल में किया है, डिटेल्ड। तो वो जाके देख लेना एक बार। और फर्दर एनालॉगी एनालॉगी से भी क्वेश्चन बनता है, बट लेकिन फिर भी तुम लोगों को आसान होगा, पड़ेगा या फिर नहीं, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्दर क्लॉक से मिरर वाला, वो वाला क्वेश्चन पूछने का चांस है। क्लॉक का मिरर में ऐसा दिख रहा है तो फिर रियल में क्या होगा, टाइम क्या होगा। सो कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस है, श्योर क्वेश्चन है। क्लॉक से भी श्योर क्वेश्चन है। मेंसुरेशन मेंसुरेशन से डेफिनेटली होगा। पिछले ईयर में वो सर्कल का सवाल आया था। सिमिलरली इस साल में भी जो जो चीज हमने क्लास में किया है ना, वो अच्छे से दे के जाना। वो भी छोटा छोटा वीडियोस है, इतना बड़ा बड़ा वीडियोस नहीं है, तो टाइमली दे के जाना जरूरी है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनता है। ऐसे ऐसे जाएगा नॉर्थ से, थोड़ा वो जाएगा 10 मीटर जाएगा ईस्ट, 10 मीटर जाएगा, वो वैसा वाला सवाल पूछने का। एक बार दे के जाना, वहां जाने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन वन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से वीडियोस देखे जाना है, ठीक। सो फर्दर एवरेजेस एंड एजेस, एजेस पापा का एज, वो वाला चीज पूछने के चांस है। और एवरेज में एक बंदा का वेट ऐड करते समय या फिर एक बंदा का वेट रिमूव करते समय इतना एवरेज हुआ है, वैसा वाला सवाल पूछने का चांस है। तो ये चीज 7 घंटा, इफ यू आर रेडी टू डेडिकेट 7 आवर्स, मैक्सिमम 7 आवर्स पर डे, 7 आवर्स नहीं लेने लेगा। वॉइस लेक्चर्स इन 1.5x, 1.5x मतलब इससे आधा, आधा से कम पड़ता है टाइम, ठीक। तो it will be around 4 hours, 4.5 hours if you are watching it for 3 days, ठीक। if you're starting today itself, you will be having 4 days, 4 days होगा तो फिर 5 घंटा मिनिमम पर डे इसके लिए मैक्सिमम डेडिकेट करना पड़ता है। तो फिर 1.5x में देखेगा तो फिर इससे आधा 2.5 आज आसान होगा गाइस। बट towards the end of this video, I'm after planning to stop this video right now. Towards the end of this video, एक चीज आप लोगों से बताना है मुझे, क्या अभी तक जितना एफर्ट्स तुम लोग डाला है उसका रिजल्ट 4 दिन में, उसका रिजल्ट क्या 4 दिन में होने वाला है। लाइक you just have to give the exam within 4 days, and these 4 days are the key days which decide whether you're going to get into IIT या फिर NIT। थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा तो फिर NIT से IIT आएगा, और अच्छे से पढ़ेगा तो फिर IIT जोधपुर से IIT खड़गपुर आएगा, वैसा सीन है। IIT रोपार से IIT जोधपुर आएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करना है गाइस, और बाकी गाइडेंस वगैरह हम देते रहते हैं। वी विल बी गिविंग गाइडेंस as the time passes by. So guys, thank you so much for watching the lectures, and I'll do from bottom of my heart. We team Crack NCET wish you all the best for your exams. अच्छे से मचा के आना है एग्जाम में, और पढ़ाई अच्छे से करना है। And we do believe that you guys are definitely going to come to IIT Kharagpur, one of the best college all over our country, as a juniors in the Department of Education. Uh, you will be joining in this ITEP program, Integrated Teacher Education Program. So I do believe this. And with this, I'm ending this video. So guys, thank you so much. Thank you so much. And Dil se, I wish you guys all the best. Thank you so much. Till then, this is me, Keshav Krishna, signing out.